अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बहुत मज़े के क्रीम रोल्स बनाए। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए आप इस वीडियो को देखते रहें। Hey guys, what's up and welcome back to your video. Today I've made these amazing cream rolls, so if you want another recipe, keep on watching this video. For this recipe, we're going to be needing 500 grams of all-purpose flour, हमें चाहिए 500 ग्राम all-purpose flour, a quarter teaspoon of salt, quarter teaspoon नमक, 50 grams oil, 50 ग्राम तेल, 200 grams of margarine, 200 gram margarine, and 250 grams of water, or 250 gram pani. First, we're going to start by combining our flour, salt, and our oil. पहले हम अपना flour, salt और oil को combine करेंगे. First, we're going to combine our flour, salt, and oil. Now we're going to slowly add in our water. अब हम थोड़ा-थोड़ा करके अपना पानी डालेंगे अंदर. Now that our dough is done, we're going to set it aside. अब हमारी dough हो गया, हम इसको side में रखेंगे. Over here I have my margarine, and what I've done is I've taken it out on a clean counter and using the end of anything, a mallet, a rolling pin, anything, just want to like beat it and make sure it's nice and smooth. अब हम अपनी margarine को कोई भी clean surface पे जैसे mash type करेंगे. You can use, आप कोई भी use चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप rolling pin का end use कर सकते हैं, mallet use कर सकते हैं, वो आपकी choice है, मगर आपको जैसे इसको smooth करना है. I have oiled my hands. मैंने अपने हाथ को oil कर लिया, and what I'm going to do now is that we're going to form a 1.5 inch thick square cube. अब हम इसको 1.5 inch thick square cube form करेंगे, ताकि हम इसको अपने dough के बीच में डाल सकते हैं. As you can see behind my margarine, I have my dough. I have rolled it out and I've formed a square out of it. And this is the square that we're going to be putting our margarine cube into. But you want it to be big enough so that you can fold your margarine inside. हमारे margarine के पीछे डो पड़ी हुई है और वो हम डो को हमने स्क्वायर शेप में रोल किया है और आपको इतना बड़ा चाहिए कि आप अपनी margarine की क्यूब उसके अंदर फोल्ड कर सकते हो. I have put my margarine cube inside and I'm just like slightly spreading it out. मैंने अपने margarine की cube अंदर डाल दी and I'm spreading it out and we're gonna fold it inwards from all four sides. और हम सारे four sides इसको अंदर की तरफ fold कर रहे हैं. Okay, so now that our dough is folded with our margarine, I am rolling it out, and for that I have this technique of pushing the dough down first and then rolling it out. अब हम अपनी dough को roll कर रहे हैं. मेरे पास ये टेक्निक है कि इसको पहले नीचे की तरफ push करके फिर इसको roll करेंगे तो it's much easier और ये आसान से हो जाता है. So I've rolled my whole dough out and it's really thin, and now we're going to fold it in from all four sides. अब हमारे roll हो गए बहुत thin sheet और हम अब सारे four sides से इसको अंदर की तरफ fold करेंगे. I have cut a section of my dough. मैंने एक section अपनी dough का काटा हुआ है. You can refrigerate the dough for around a week. आप अपनी dough को 1 week के लिए refrigerate कर सकते हैं and you can use it in the future. So अभी के लिए मैंने सिर्फ एक portion लिया and for now I have just taken a portion. इसके लिए आपको एक लंबा rectangle shape में इसको roll करना. For this you want to roll it in a long rectangular shape, but don't worry if it's not really a rectangle right now because you can cut the edges off later. अगर आपका अभी rectangle नहीं बन रहा तो फिर कोई बात नहीं, आप end में काट सकते हैं edges को. Over here I have a pizza cutter. If you don't have a pizza cutter, you can go ahead and use a knife or any other kind of cutter that you have. अब हम अपने pizza cutter या जो भी आपके पास knife या जो भी है, हम उससे thin strips काटेंगे and we're going to use that to cut out thin strips. And you want to make sure that at the end you cut off these edges as well so that it's like a long rectangle and it's straight. आप end में edges को भी काट सकते हो and yeah.
Over here, I have 1 egg that I'm gonna beat. इधर मैं अपने अंडे को beat करूँगी. Now we're gonna brush our dough strips with our egg that we just beat, but you don't want to heavily brush them, just lightly. अब हम अपने dough strips को lightly egg से brush करेंगे. Wait, so I have these stainless steel ice cream cone shape things, and what we're gonna do is we're gonna roll our dough around it, and you want each roll to be overlapping so that it stays together. अब हम अपने stainless steel cone पे पूरा roll करेंगे और आपको ये make sure करना है कि थोड़ा वो overlap हो ताकि सारा जैसे टूट नहीं जाए. Now that these are done, we're gonna bake these at 150 degrees Fahrenheit for 20 to 25 minutes. अब हमारे हो गया, हम इनको 20 to 25 minutes के लिए 150 degrees Fahrenheit पे bake करेंगे. But before that, we're gonna brush these with egg. मगर उससे पहले हम इसको egg से brush करेंगे. इधर मेरे पास एक water spray bottle है. Over here I have a water spray bottle, and we are just going to spray our cones with it. अब हम अपनी cones को इसके साथ spray करेंगे. Now that these are done, we are gonna do our whipped cream filling. अब हमारा हो गया, हम अपने whipped cream filling बनाएंगे. And for that, you just need whipped cream. I'm using Whippy Whip's whipped cream, and it's super easy. It's literally instant. You just have to whip it. मैं Whippy Whip की whipped cream use कर रही हूँ. आपको सिर्फ इसको whip करना है और ये बिल्कुल instantly हो जाता है. And then we're just going to put it into a piping bag, fill it, fill our cones with it. फिर हम अपनी piping bag से इसके अंदर fill करेंगे, and then they're literally ready to eat. और फिर ये तैयार हो जाता है खाने के लिए. आप piping bag में whipped cream डालो और फिर इसको filling कर, and then they're delicious, to be honest. So try this recipe. So हमारे cream rolls तैयार हो गए और बहुत मज़े के लग रहे. And our cream rolls are ready and they look amazing. If you guys like this recipe, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe and share my videos, and go follow me on Instagram, Facebook, TikTok and Twitter. Bye! हमारा cream roll तैयार हो गए, बहुत मज़े के लग रहे. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. मुझे Instagram, Facebook, TikTok और Twitter पर फॉलो करें. Bye!